Most of us know when we see injustice. We can tell when something should not be, when there is wrong. But not all of us speak up against it or even show that we care. Some people stand up though, and they do things that challenge injustice. It's almost as if they speak on behalf of all of us, who know the difference between right and wrong, but are either not inclined or too afraid to speak. One such person in recent times was Sabeen Mahmud, a young human rights activist from Pakistan. A technically savvy, well-educated urban woman, Sabeen started T2F, or the Second Floor, a space aimed at providing a platform for open dialogue. It hosted talks, musical recitals, book releases, art exhibitions, and provided space for people to just come, sit, and exchange ideas. Among the many campaigns she was part of was the Pyar Hone Dein campaign, against anti-Valentine's Day protests from the Muslim right. This may seem frivolous, but Sabeen received death threats as a result of this campaign. She did many things that challenged the status quo and the injustice in the society around her. 3 years ago, she hosted an event focusing on Baluchistan, a state that's been home to a growing self-determination movement. After the event, which she was urged to cancel, Sabeen was shot several times in her car while driving home with her mother. Her mother survived, though she still has one bullet in her. Today, 3 years after Sabeen was murdered, we want to reflect on what it means to be the mother of someone who lived like Sabeen. Sabeen sought to change the world, to get rid of the evils she saw, not to accept them. What does it take to raise a child like that? Her mother, Mahenaz, gives her insights. Mahenaz Mahmud, welcome to Peace Vigil. Thank you for talking to us. My very first question is whether it is right to think that a person who comes from a relatively well-to-do class of society can actively, very actively participate in movements for social change. I think they can. I mean, aspire करने के लिए मतलब क्या रुकावट है? आपके पास पैसे हों ना हों, उससे तो कोई इट्स नॉट ओनली कि अगर आप गरीब हों तभी आप aspire करें ऐसे काम करने के लिए, बल्कि आई थिंक जो जिनके पास पैसा होता है, देखिए एक तो एज सबकी आती है ना जब यूनिवर्सिटी में होते हैं जी, you know, when that rebelliousness, the activism, you know, you want to change the world. Yes. एक होता है ना वो change the world वाला, फिर आप उस world में अक्सर लोग adapt हो जाते हैं. You know, all those we are all socialists at some point, you know, in when we are in university, and you're reading about learning new things, you're trying to make sense of the world, and you're, you know, toying with all the isms, and you know, but by and large most people then give in to the money, to the lifestyle, you know, फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी हमारे अब शादी हो जाती है, careers, फिर we want to give our children the best, and they leave all the idealism behind. But कुछ तो ऐसे हमने दुनिया में through history we have seen people who have. Well, Sabeen wrote, and I read recently, that those socialist sort of ideas were encouraged by you. Yeah. Or I can't remember the Stoked exact. by Yes, my yes, mother. stoked by Na, my my mother. socialist tendencies were stoked by my mother. She wrote that, yes. नहीं, मैंने हमेशा उसको encourage किया. मैंने कहा कि because I thought that was right कि you know बहुत inequalities है दुनिया में. ठीक है हम बहुत बड़े politicians ना बने या हम पूरा, but हम जो भी world को change कर सकते हैं उसको तो हम करें ना अपनी तरफ से, you know. उसने मुझे भी देखा कि you know ग्रामर स्कूल में पढ़ा रही थी मैं, वो कौन छोड़ता है, वो बहुत it was a huge thing, but that wasn't what I wanted to do with my life, it, you know, and मैंने छोड़ा उसको. मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है, ये मैं तो ठीक है यहाँ मैंने बहुत सीखा, मैंने किया क्योंकि मुझे उस वक्त फायर था कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में काम करना है. उन बच्चों को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज़ या ये पेडागोजी मिल सकता है जो मैंने अभी यहाँ ग्रामर स्कूल में ट्राई किया, उनका इक्वल राइट है, वहाँ मुझे करना है. Mehnaz, your parenting philosophy is different, anybody can tell, because you told Sabeen that it is normal, that it is right, it is fine,
that she follows her conscience and not be dictated by the regular norms of how we define success. For you, it was normal that a child follows her conscience and fights against injustice around her. I would like to know what made you the parent you were. You did mention your grandparents, especially your grandfather, who was influenced by Gandhi and by the anti-colonial struggle in India. My grandparents were very simple people, and हालांकि जो मैं सुनती हूँ कि मेरे जो दादा थे जिसको हम पापा कहते थे, he was मतलब खूब अच्छे, मतलब इन मन से जो ज़माने में जो भी समझा जाता था, कपड़े वपड़े रहना सहना था, लेकिन गांधी जी के मूवमेंट से वो बहुत मतलब मुतासिर हुए। और ये कहानियाँ बड़े होके भी मतलब बचपन में सुनते भी आते थे हम लोग, तो उससे मुझे बहुत उसका असर हुआ कि ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक आइडियल के लिए, एक पूरे मुल्क के लिए आपने अपना सारा कुछ गिव अप किया। वो बहुत इट रेजोनेटेड विथ हुएवर आई वाज इनसाइड, जो मेरा अपना जो टेम्परामेंट था। मेरे अपने वालिदैन बहुत ज़्यादा सोशल थे और रोज़ आना जाना, पार्टीज़, हल्ला गुल्ला। शायद ये भी था कि मैं ख़ुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त समझा नहीं जाता था कि इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। तो मैं आई प्रिफर टू बी विथ माई बुक्स एंड बी ऑन माई ओन, रादर देन बी इन सोशलाइजिंग एंड टेकिंग जो भी benefits थे of a privileged lifestyle. I didn't. But you had them. You had all the privileges. I had all the privileges. Yeah. I grew up in privilege, but I was not comfortable in my skin with my privilege. क्योंकि I don't know, मैं बहुत I think आयास के साथ और domestic help के साथ मैं बड़ी हुई, तो मैं उनके साथ ज़्यादा identify करती थी, तो मुझे कुछ guilt होती थी अगर ज़्यादा अपने ले लूँ या कि हमारे पास इतना है इनके पास नहीं है। ये लोग अपना खाना भी इनका अलग बनता था, तो वो चावल भी वो मोटे वाले चावल, तो मैं जाके उनका ही खाना लेती थी, टेबल से उठ के ऐसे नहीं मैं उनका भात खाऊंगी। ये इस तरह की चीज़ें। और फिर वो गार्डनर की बेटी और उसकी बेटी और उन लोग क्या खेलते थे और क्या बातें करते थे, और मिट्टी के हमेशा खिलौने होते थे, कुछ बहुत एक सिंपल थिंग्स। तो और वही सबीन में भी आपने बाद में बताया कि वो जैसे क्रिकेट खेलती थी, तो जो भी सड़क पे बच्चे हैं जो भी मिल गया, तो बच्चे क्या बड़े बल्कि ज़्यादा कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन के लेबरर्स होते थे उनको पकड़ लिया, किसी का ड्राइवर, किसी का चौकीदार। तो मेरी एक दोस्त थी, वो बहुत मुझसे वो होती थी, तो क्या करती हो, रेजिंग अ गुंडा और व्हाट। सो एंड हर डॉटर वाज एग्जैक्टली द सेम एज, 1 महीने का फ़र्क था दोनों का ना। तो वो फिर वो हैंड बैग में वो बच्चों को शौक़ होता है ना, फिर शी एज दे वर ग्रोइंग अप 10, 11, सबीन को वो शौक़ ना मैंने डाले उसमें, ना उसकी हुई कि मुझे ये करना है या ये चाहिए। एंड सबीन जब when she was growing up, तो we didn't have much money, everything had to be like really नाप तोल के। और सबीन को मैं हमेशा ये कहती थी कि देखो ये है हमारे पास, ये नहीं है, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। एंड जो स्कूल में वो गई, वहाँ पे सारे बच्चे बाहर जाते थे समर में ना, लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं को कहीं, वी कुड नेवर अफोर्ड इट। बट आई जस्ट यूज टू बी वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। असर हमारे पास नहीं है, हम नहीं जा सकते, बात ख़त्म। एंड शी नेवर समहाउ गॉट अ कॉम्प्लेक्स के आई कांट डू इट, वी कांट गो, माई फ्रेंड्स आर गोइंग हियर और देयर। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मैं सुनती हूँ, वो कहते हैं कि बच्चों का बड़ा प्रेशर है कि उनको यहाँ जाना है, उनको वो करना है। एंड आई यूज्ड टू से व्हाट डू यू मीन बच्चों का प्रेशर है, इट्स ये बात समझ ही नहीं मुझे आती कि आप बच्चों से साफ साफ बात करें कि व्हाट इज़ योर स्टेटस, आपकी क्या हैसियत है, आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। और सबीन के लिए ये था कि बुक्स वर द बिगेस्ट ट्रीट, कि मेरे पास अगर कुछ आई हैड टू चूज़ कि ये लेना या वो लेना, तो इट वुड ऑलवेज बी अ बुक। मुझे खुद भी बड़ा शौक़ था, तो सबीन के लिए भी बड़ा ये था कि कम ऑन लेट्स गो गेट अ बुक। ईदी भी मिलती थी या कुछ, तो वो इट वॉज के
It was never like a toy or a something. ये नहीं कि toys नहीं थे उसके पास, बिल्कुल थे, but more open-ended kind of toys. I wouldn't just go on buying things. Often our names or our nationalities tend to define our identities. So we say we are this or that because of the accident of birth, really. You know, we are born into a religion or in a country or in the form of a girl or a boy. We don't decide it. In case of Sabeen, the identity went beyond the given. What was her identity? That's what she said to somebody who was saying, "Ki, what are you?" You know, and she was saying, "What do you mean? You know, what am I?" And then she said, "My mother just raised me to really be a global citizen. कि बस आप पहले इंसान बनो. People are people all over the world, and you need to figure out whom you want to be friends with, not on the basis of their religion or their beliefs. Beliefs, yes, in a way, but Yeah. their values more than." Anything else? Huh. So talking about other groups and that, you know, you don't have to be a certain way to be a good person or to be a good Muslim. वो जो कुछ overt behavior or mannerisms or dress codes or whatever, not necessary to be a good person. Mehnaz, you are a very well respected long-time teacher and advisor to educational institutions. You're also a counselor. Do tell us about your work. I've chosen to work in a school which is a girls' school. It's not a co-ed school. And the class is a very kind of very conservative, very traditional middle class kind of strata that we are serving in this school. And ये मैंने क्यों choose किया? I don't know whether it has something to do with also with you know, Sabeen's incident. I haven't examined that deeply enough. Did that take me there? But to some extent, yes, because it is to kind of get these children to be thinking in a more progressive way. That, you know, just to be a good human being does not mean you have to wear hijab and you have to be so, like, you know, a fundamentalist or that religion. ठीक है, it's important for some. I'm not denying कि नई ज़रूरत है. आखिर इसको create किया गया इंसानों से, तो कोई as an institution, for many people it's still important in order for them to do the right thing or wrong thing or whatever. Wrong ही thing मुझे तो लगता है अक्सर करते हैं religion के नाम में, but इस तरह से तो लोग नहीं सोचते. तो to put that, you know, to give those children an education which promotes critical thinking in the hope that when they grow up, these girls will become mothers, most of them. तो वो फिर अपने बच्चों को एक अलग तरीके से रेस करें, क्योंकि सोसाइटीज़ या नेशंस ये 5-10 साल में तो नहीं बनाए जाते ना. ये तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म. तो मेरा बहुत एक लॉन्ग टर्म एक इसका विजन था कि मुझे ऐसे स्कूल में काम, and it's a school of 1,000 children. Okay. So it's a big school, you know. Is it? What is your role? Is it? So my role is as an academic advisor to the school, and so I do like workshops for teachers, teaching them how to engage children in critical thinking, you know, active learning, वो rote memorization को निकालना और वो दूसरी चीज़ें करना, और बच्चों को बहुत सोचना, and lots of extracurriculars, फिर good citizenship, you know, एक वो पूरा स्कूल का एक responsibility and honesty का एक थीम के साथ, और जो पूरा पुराना ज़्यादातर जो ब्रिटिश स्टाइल वो स्टूडेंट काउंसिल भी अगर बनता है तो हेड गर्ल एंड हेड बॉय एंड यू नो इट्स जस्ट मोस्टली अ सेरेमोनियस पोजीशन, वो कुछ खास करते नहीं हैं. आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक हियर बट एटलीस्ट देयर इन कराची. तो वो भी स्टूडेंट काउंसिल को ज़्यादा बहुत एक्टिव बना दिया है. एंड आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑन, पहले तो बड़ा एक वो था ना कि नो Miss, how can we have this? We've been wanting to be head girl since then, you know, since we were in year 5 or in grade 5 ये वो. तो फिर उनको समझाना कि भाई आप हेड गर्ल अभी स्कूल में आप 1 साल के लिए बनेंगे, आप जब फिर स्कूल से निकलेंगे माशरे में तो आप किसके हेड बनोगे?
किसके हेड गर्ल बनोगे? तो आप कोई भी आप काम करोगे तो एक बोर्ड होती है या एक सोशल सेटअप होता है, एक चेयरपर्सन होता है, एक ट्रेजरर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं, एक कम्युनिटी सर्विस एक चीज़ होती है. सो नाउ द चिल्ड्रन हैव रियली सेटल्ड इनटू दैट. एंड आई सेड जस्ट बीइंग द चेयरपर्सन of the student council is not the most important role, because each role is different. So I did presentations for them and I talked to them, I've taught them about these things कि आप देखो कि आपकी क्या strength है. Chair बनने की strength है. If you're good with handling money, then maybe you should be the treasurer. If you're good with documentation and whoever is the secretary has a lot of work to do. You have to make minutes of the meetings, you have to make an agenda before you have a meeting. ये सारी जो life skills ही है ना ये, तो मैंने कहा हेड गर्ल बन के आप क्या कर लोगे? और शायद it is also training in democracy. It is exactly a training in democracy. तो then फिर ये ना कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट काउंसिल की, उस पर हमने बात की. फिर आई टॉक टू देम अबाउट आवर कम्युनिटी. मैंने कहा हमारी कम्युनिटी में कौन कौन है. सो देन अगेन बिकॉज आई वाज नोटिसिंग थिंग्स इन द स्कूल के बच्चे तो ज़्यादा जो डोमेस्टिक स्टाफ है उनके नाम भी नहीं आते, उनको विश नहीं करते. वो कितने हमारे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, वो नहीं हो एक दिन नहीं आए अगर सब लोग तो क्या असर होगा हमारा. मैंने कहा उनका आपके बाथरूम नहीं साफ़ हो गए, क्लासरूम नहीं साफ़ हो गए, कैसे पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे. तो सबका रोल है ये स्कूल को चलाने में. इट्स नॉट जस्ट योर टीचर्स, इट्स नॉट जस्ट योर प्रिंसिपल, बट ईच एंड एवरी पर्सन. तो सारे स्टेक होल्डर्स की बात की कि स्कूल के कौन स्टेक होल्डर्स है. फिर मैंने कहा हमारे बाहर एक कम्युनिटी है, फिर हमारे इर्द गिर्द एक कम्युनिटी है. सो फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द स्कूल इटसेल्फ to the wider community कि हम क्या क्या कर सकते हैं. तो now they're doing projects, they're raising funds, they're doing projects outside to see कि हम किस तरह से वो कर सकते हैं. Then I talk to them about ethical campaigning. When you're क्योंकि उनका पूरा 1-3-4 दिन होते हैं ना before the election. तो election का कि क्या again it's a training in democracy कि how will you this thing campaign. You're not going to offer like छोटों को कि हम आपको टॉफ़ी खिलाएंगे या वो करेंगे, क्योंकि bribing and all of that. इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी स्कूल में. या कम अंडर प्रेशर कि योर फ्रेंड इन योर आप क्लास 6 में है तो वो क्लास 10 में वो मेरी दोस्त है, वो मेरी बहन है, तो उसके लिए वोट करना. सो यू हैव टू थिंक कि व्हाट डू यू वांट, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू यू एंड यू आर अकाउंटेबल टू डू द राइट थिंग. तो जो लोग खड़े होने वाले थे उनके लिए अलग मैंने सेशंस की, जो वोटर्स थे उनके लिए मैंने बहुत सेशंस की कि अब आप कैसे वोट करोगे और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, So ethical campaigning, ethical vote. So this kind of work I do, You also counsel the children who are in the schools that you interact with. So tell us about that work as well. मैं करती हूँ with very young sort of children and in their early teens up to 15. हमारे स्कूल में 15-16 तक फिर वो मैट्रिक पे चले जाते हैं करने के लिए, फिर कॉलेज में चले जाते हैं. तो वो ज़रा ज़्यादा ट्रिकी है बिकॉज़ अगर मैं बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हो जाऊँ बच्चों के साथ तो they have to go back to that home of theirs and it's very tricky. Just before I came, there's this one child whom I've been talking to. She's 14 and she is very, very concerned and very upset that next year her father wants her to wear an abaya. And she's beside herself कि ये मैं नहीं करना चाहती हूँ. But my father wants me to do this and I have to do it. I said, talk to your mother. And her nani is more liberal, and interestingly her nani and her mother also came from Dhaka. I found out later from her, and because I started telling a little bit about myself just to explain ke, and she said, oh, my nani also was in Dhaka, my mother also came from there. So I was thinking क्या है कि वो ज़रा ज़्यादा एक liberal, slightly more secular kind of background, in even what was East Pakistan, because their song, music, dance wasn't considered like un-Islamic. यहाँ एक बहुत even बिंदी भी लगाते हैं वो लोग, लगाते तो कुछ हैं. नहीं है ऐसा. तो एक you just grew up in a more kind of
liberal way. And here she was saying, like, her father, she said, my father is very, very intelligent and he's creative, वो सुनते भी हैं, but he's concerned कि जो neighborhood में लोग हैं वो क्या कहेंगे. तो ये एक जो ये लोग क्या कहेंगे वाला जो प्रेशर है ना, इसको फाइट करना बहुत मुश्किल है. मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि इस बच्ची है वो, she can't go off and say I'm leaving home. मैं उसको कुछ भी बोलूं, मगर वो घर she has to go back home, right? Go back home. Whereas with adults, they have more freedom over their choices and they have more agency. What do you see yourself doing 10 years from now? I think I see myself doing pretty much what I'm doing now. I think more of the same, but spreading it to other schools. I feel that whatever I'm doing here, and there are lots and lots and lots of other changes which I've made in the school, which I haven't talked about. Little things which are making. Please do talk. Yeah, if you want to mention anything. कहाँ हम जाएं, इतनी हैं चीज़ें. तो बच्चे जो हैं. जी. So I'm actually seeing our school become like a pioneer in giving children the sense of being active citizens and promoting social justice, a process of democratic thinking, critical thinking. And I'm desperately looking for someone who could kind of document this process. I could do it myself as well, but I've got too many other things on my plate right now. To document this process as a case study and then to invite other schools to come and see it, because I can't go to so many schools, but if we could get some of the so-called elite schools to make these changes and not be so controlling and give children more responsibility and more agency to make decisions and to make the right decisions, or even if they make the wrong ones, to reflect on them and then change course, because that's how we learn eventually, not by imposing our ideas onto others. तो फिर जब एक पूरे वो lot of schools में एक change अगर it's a dream अगर आता है, तो फिर जो दूसरे schools है ना, who all aspire to be like those schools, the change will come automatically, because they will want to do, अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं, धीरे धीरे it will actually become a norm rather than an exception. That's what I'm hoping. अगर आपको मौका मिले अपनी बेटी से बात करने का फिर से, तो कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहेंगी? Is there something that you would like to say to her? I want to talk to her every day, and क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें शेयर करते थे. जैसे अगर अभी बोलो कि क्या बोलना है सबीन को, तो मुझे जोबा की एक्सपीरियंसेस उसको बताने का मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं म्यूज़ियम में गई या मैं गांधी हाउस में गई, क्या देखा, क्या सोचा. तो वो उस तरह की बातें रोज़ जो कुछ होता है मेरे साथ, क्योंकि हम लोग रोज़ बात करते थे दोस्तों की तरह, तो मेरा तो रोज़ाना दिल चाहता है कि मैं उससे बात करूं और उससे शेयर करूं, फिर वो अपना कुछ सवाल पूछे, फिर अपना पर्सपेक्टिव बताए, फिर वो अपनी बात सुनाए. तो इस तरह एक चीज़ अपने जहन में असिमिलेट होती है, अकोमोडेट होती है, एक नई सोच पैदा होती है. वरना ये अपने एक्सपीरियंसेस वो अधूरे रह जाते, मुझे लगता है मेरे लिए, क्योंकि जब तक वो मैं उससे नहीं शेयर करूं, तो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस मैंने फुल्ली जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जो भी है. तो हर वक्त मेरा दिल चाहता है कि मैं बात करूं. और एक हमारी बात भी अधूरी रह गई थी, जिस वक्त वो गोली लगी थी उसको, तो हम बात कर रहे थे, वी वर मिड कॉन्वर्सेशन. तो वो भी मुझे लगता है कि कितना बदतमीज़ है, हमारी बात तो पूरी होती, इंटरप्ट कर दिया हमें. तो ये भी नहीं उसकी माँ ने सिखाया कि जब दो लोग बात कर रहे होते तो इंतज़ार करते हैं. क्योंकि हमारे इसमें बहुत ये था कि एक बात जब तक एक नहीं ख़त्म करे, डोंट इंटरप्ट, यू हैव टू लेट पीपल टॉक, यू हैव टू लिसन. तो हम लोग बात वो इवेंट की ही कर रहे थे, बलूचिस्तान वाली.
तो कुछ याद है आपको कि क्या 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 बात? मुझे ये सिर्फ एक चीज़ ये याद है कि मैं उसको कह रही थी कि सबीन, आई विश कि तुमने ये कॉन्वर्सेशन मॉडरेट किया होता. अच्छा. तो क्योंकि I thought that she was, because in that video she's नहीं, the वो one who's... उसने इंट्रोड्यूस किया था एंड okay. देन Somebody else was moderating. somebody else was moderating and she said कि अम्मा मैं बहुत वो दिल फेंक के साथ इतना मेरा काम था कि मैं एकदम से, और वो कभी ऐसे ही मॉडरेट नहीं करती थी कोई भी चीज़, तो कहती फिर मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता. अच्छा. यू नो, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई क्वेश्चंस बिफोर हैंड, आई वुड हैव तो नीडेड सीरियसली काम करने में बिलीव करती थी कि करती भाई थी, कुछ मुझे सतही काम नहीं करना. Today, Mehnaz works on many projects that Sabeen was part of, in addition to all the teaching work she does. She also travels to different parts of the world to continue Sabeen's work and also start projects that Sabeen wanted to work on. You were watching an interview with Mahenaz Mahmud by Peace Vigil, the mother of an activist. When a committed activist is taken away from us, we remember her for all the good work she did. There is a lot being written about Sabeen, and all of it is very important to highlight the causes she championed so that her warrior spirit lives on and inspires us. I want to take a few moments to thank the mother of this amazing woman. She is herself badly wounded in the attack, but she mustered enough strength to come to the funeral today. Bullets still embedded in her body. I want to thank this brave mother for standing by her daughter when she challenged the injustices around her. She supported and encouraged her child to follow her heart. Not many parents do that. I hope that if our own children want to do something dangerous, like trying to change this world for the better, we'll understand them and support them, that we will not push them to become successful and important. I hope we will give them space to be good human beings, first and foremost, just like Sabeen's mother did.